and I worked on the combination of technology, data science, and public health. So this was the start. Recently, my focus is on social implications of data science and artificial intelligence, and that's how आगाह की तरफ मैं और हया इस जर्नी में साथ शुरू हुए. So, Assalamu alaikum. Okay, all right. Haya, walaikum salam. Again, मुझे भी सबसे पहले start करना है by thanking women in tech and about the platform that you've given us, and also आपने हमें opportunity दी at the inception of our idea. तो ये हमारे लिए बहुत confidence boost था कि किसी ने हमें पहचाना और हमारे idea को इतना appreciate किया कि हमें बुलाकर हमसे बात कर रहे हैं. About me, I am an engineer, and हमारी research, मैं और मरियम साथ यूनिवर्सिटी गए थे, and हमारी research जो है वो undergrad से शुरू हो गई थी. We worked on a computer mouse जो आप अपनी आंखों से control कर सकते हैं. This was back in 2011. And उसके बाद से graduation के बाद से I have had some experience with entrepreneurial ventures, but last year I was drawn back to engineering because at heart I'm an engineer. Or I did some courses on artificial intelligence and data science in the last few months. जितनी भी कोशिश मैं कर सकती थी कि मैं इस subject के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकूं, समझ सकूं, and at the same time उसको implement करने की जब बात आई तो मेरा भी focus जो है और priority जो है वो थी किसी social मकसद के लिए हम use करें. And the thing about artificial intelligence is कि अगर आप उसकी power really समझे ना, it's quite mind blowing. And what I don't understand is कि already अभी तक why haven't people already used this in street harassment? Because it's so powerful. So we thought, okay, किसी और ने नहीं किया, हम कर लेते हैं. And that's when I joined forces, and we thought, चलो इस पे research करते हैं. And then we found out what has been done on the topic and what is the information that we have so far. And then how much further can we take this? And what can we do to actually have impactful solutions that will help the problem? वहाँ से आगाह शुरू हुआ. Right. Okay. So थोड़ा सा मुझे बताएं कि आगाह है क्या, ठीक है, और ये भी कि did you get an inspiration from somewhere global या खुद से आ गया? I know there's a problem, ठीक है. So problem statement भी थोड़ा सा ज़्यादा I want a detailed क्यों किया? अपना काम करते यार, पढ़ते बड़े होते, शादी करते, अपने घर जाते. Why did you do this? What was the underlying problem that you saw that required you to come forward and do this? And what is it all about, and where did the inspiration come from? So there's 3 questions here. Okay, so I'm going to start with why we're doing this. And the thing is, I believe we are one of very few people who have been given the opportunity to study जितना we have studied, and research में हम गए हैं, and artificial intelligence के बारे में हम पढ़ रहे हैं, a very select group of people. So why not use your abilities to help people as much as you can? तो ये एक driving factor था. तो अगला सवाल ये है, why street harassment? And इसका answer quite simply ये है कि आपने कहा कि I know there is a problem. And we also thought that everyone knows there is a problem, but actually, अब हमें लोगों से बात करते हुए लग रहा है there is. I don't know there's a problem. I'm asking you. You're asking me. The thing is कि जब हम औरतों से और लड़कियों से बात करते हैं ना, वो बहुत आराम से कह लेती है, हाँ हमें तो पता है there is a problem, but we haven't seen that when we're speaking to men and boys. So first thing is कि problem है क्या? I'm sorry, मैं idea के ऊपर आ रही हूँ. I want Maryam to discuss the problem. तो idea जो है वो इस तरह आया था कि at least I know that this is a problem, and it's a personal problem, and it's a very traumatic problem. और especially Me Too movement के बाद ये बहुत ज़्यादा सामने आया था कि you are not alone in this. Literally, आप इर्द-गिर्द देखो तो everyone, every woman, every girl has a story, and it's very problematic. Also because it's so hidden, nobody likes talking about it, including us. We don't like talking about it, and when you start realizing statistics say about 97% of women in Pakistan have suffered from street harassment. 97%. So literally everyone. And why is this still going unchecked? Why is no one doing anything about this when we have the ability to do so much about it? It just looked like
an opportunity जो आपके सामने बैठी है. You can do this. And I believe if we don't do this, someone else will. This has to happen now. With the technology that we have access to and the problems that we have, this is eventually going to happen. We just happen to be the first people to do it. Right. So basically, मैं add करना चाहूँगी कि as I already mentioned कि street harassment इतनी prevalent है, तो हमारा पहला step ये था कि fine, अगर ये इतनी prevalent है, तो probably इस पे काफी research हो चुकी होगी. So we go back to literature और surprisingly या कह लो not surprisingly हमें ये पता चलता है कि इस मामले को लेकर कुछ किया ही नहीं जा रहा. यानी कि एक बेसिक आपके पास स्टैट्स नहीं है जो कुछ कंट्रीज ने इस पे निकाले भी हैं. व्हाट सॉल्यूशन, आई मीन वो किस तरह सॉल्यूशन की तरफ जा रहे हैं, एंड इट सरप्राइज्ड अस क्योंकि सॉल्यूशन ये था कि कुछ प्लेटफॉर्म्स बने हुए हैं जहां पर लोग आके अपनी स्टोरीज शेयर कर रहे हैं. बट इज दैट अ स्ट्रेटजी? एंड मोस्ट ऑफ द सॉल्यूशंस आर बेस्ड ऑन टॉकिंग, either talking about the street harassment on a platform, but not providing एक proper जैसे steps होते हैं, steps. How can we, first collect data, define the problem है कितनी? Okay, fine, we know 97% लोगों के साथ हुआ है, लेकिन वो कौन है, and what are they doing about it, and कितनी depth पे ये problem है. और फिर हम चाहते हैं कि फिर हम इसके उसी तरह solutions निकालें कि एक बड़े लेवल पर किस तरह इसका solution निकला जा सकता है, और इंडिविजुअल लेवल पर वो विक्टिम उस वक्त क्या कर सकता है, साथ में खड़ा इंसान क्या कर सकता है. इसके लिए हमें चाहिए डेटा, इसलिए इसके लिए हमें चाहिए रिसर्च, वरना हम सिर्फ we will just move on through assumptions. So basically Aagah को, if I just try to summarize it in layman's language, it is the answer to the hopelessness, to वो जो बेबसी एक लड़की को महसूस होती है ना जब वो लड़की सड़कों पे जाती है, वो जो आपको हेल्पलेसनेस की फील होती है कि इसका तो कुछ नहीं हो सकता यार, अब ऐसे ही करना पड़ेगा. एक माँ अपनी बेटी को भेज रही है, अब तो ये ऐसे ही करना पड़ेगा भाई, इस तरह इतने बजे ना निकलो, ये करो. तो आगाह उसका जवाब है. आगाह एक स्टेप है इस सोच को, मोटरवे पे आप 12 बजे के बाद खवातीन को ना भेजें. That is the solution to. So is this a solution? तो हम बेसिकली, मैं इसको अक्सर डिफाइन करती हूँ, जो सॉल्यूशंस हमारे पास मौजूद है ना, so those act like, अगर आपको कभी साइंटिफिक टर्म्स बोले ना बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए, so those solutions are the paracetamol but not the antibiotics. The infection is there, इन्फेक्शन खत्म नहीं हुई है, वो डीप रूटेड है, उसके लिए सोल्यूशन निकालना जरूरी है. सबसे पहले प्रॉब्लम को समझना जरूरी है. और आई कैन से, आज हम बात कर रहे हैं कि ये तो आम है, हमें पता है, लेकिन मैं कहती हूँ नहीं पता है, क्योंकि हमें नहीं पता था जब हमने केसेस पढ़े हैं. ये जो हमारे पास 126 केसेस अभी तक आए, आई एम सरप्राइज्ड टू रीड, ज्यादा है 127 होंगे, आई एम नॉट श्योर, सो अराउंड दैट नंबर. आई एम सरप्राइज्ड कि यार ये हो रही सड़कों पर. और एज विमेन मुझे नहीं मालूम, आई फील जो हमारा अदर हाफ है, जो हमारा काउंटर पार्ट आदमी है, मेन है, जितने भी लोगों से मैंने बात की है, भाई से, अपने हस्बैंड से, they are unaware, they are still unaware of the depth we are talking about. तो basically we want to unveil this कि भाई हकीकत ये है. और फिर we want to use technology, artificial intelligence, ये सब tools हम use कर जो हम कर सकते हैं as researchers या as कह लो मैं क्या कहूँ, like socially हम जिस तरह impact कर सकें, we will be really grateful. तो एक और चीज मैं बस ऐड करना चाहूंगी, क्योंकि अब हमें लोग देख रहे हैं, जैसे हम डिस्क्राइब करेंगे कि आगाह टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करा है, लेकिन सबसे पहले आप हैं इस सॉल्यूशन का हिस्सा. योर स्टोरीज आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर. जब तक हमें लोग डेटा नहीं देंगे, हमारा सॉल्यूशन आगे नहीं चल सकता. सो योर स्टोरीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अस. अपनी आवाज का इस्तेमाल करें, और एनोनिमस हैं हमारी रिपोर्ट्स, जो आई थिंक आगे हया डिस्क्राइब करेगी तो हमारे एग्जैक्टली सॉल्यूशन है क्या. लेकिन कीप इन माइंड दैट इट स्टार्ट्स विद यू, सो यू हैव टू टेक पार्ट इन इट, एंड वी कैन नॉट डू इट अलोन. Right. So yes, Haya, now describe the technology. Want to describe the solution now? Okay, perfect. Okay, तो हमने ये सोचा कि बिकॉज हम एक बहुत लार्ज एरिया, मतलब पूरे पाकिस्तान में सबको टारगेट करना चाह रहे हैं, तो हमारी सॉल्यूशन
हमने ऐसे डिजाइन किया, इट शुड बी वेरी सिंपल एंड इजी टू यूज। हमने कहा एक वेबसाइट बनाओ, एक फॉर्म बनाओ, और उस फॉर्म की कुछ 100 इटरेशंस हो चुकी हैं उसको सिंपलेस्ट एंड मोस्ट इफेक्टिवली डिजाइन करने के लिए। उस फॉर्म में बहुत बेसिक इंफॉर्मेशन मांगी जाती है, आप नथिंग अबाउट, नो पर्सनल इंफॉर्मेशन जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकें कि आप कौन है, तो आप बिल्कुल एनोनिमस हो गए, हमें भी नहीं पता कि किसने रिपोर्ट भरी है, ना हम उनको जाकर, हम उनसे जाके कोई बात नहीं कर सकते। और अदर कंसर्न इज कि इवन जो हरासर है ना, हम उसको भी आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, बिकॉज वी आर इंटरेस्टेड in this solution on a systematic level, not on an individual level. And especially in the last few days, motorway के केस के बाद, अब मैं हर जगह ऑनलाइन देख रही हूँ एक ही चीज, we need a systematic change, we need a systematic change. Yes, we do. But कैसे लाएंगे वो systematic change? क्या करें systematic change के लिए? एक उसकी solution ये होती है कि चलो culture change करो. हाँ ठीक है, ये चीज है, इस पे काम करना है, लेकिन इसमें तो कई साल लग जाएंगे और उसकी भी अगेन कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। तो सिस्टमैटिक चेंज के लिए हमें सिस्टम को अगर चेंज करना है, तो उसके लिए व्हाट वी आर लुकिंग एट इज द होल सिस्टम। व्हाट वी वांट इज कि हर बंदा आए और रिपोर्ट ये करे कि हम उस फॉर्म इंफॉर्मेशन ये लेते हैं कि फिजिकली उस वक्त हो क्या रहा था, दिन क्या था, टाइम क्या था, आप किधर थे, आपकी लोकेशन क्या थी, आप मॉल में थे, सड़क पे थे, public transport था क्या, the physical factors surrounding the incident. Then details about the person being harassed, आपकी एज क्या थी, आप अकेले थे कि नहीं थे, हरासर अकेला था कि नहीं था, हरासर की एज क्या थी। हम ये भी पूछते हैं, और ये हमारे फॉर्म का एक अच्छा खासा हिस्सा है, कि कोई बाय स्टैंडर्ड, कोई भी बंदा जो देख रहा था, क्या उसने आके इंटरवीन किया या नहीं किया, और कितने केसेस में लोग बीच में इंटरवीन करते हैं और कितनों में नहीं करते, और जब उसने इंटरवीन किया वाज दिस इफेक्टिव। पता चला लोग इंटरवीन भी करते हैं, आप अपनी आवाज भी उठाते हो, लेकिन पता लगता है हरासर तो फिर भी एग्रेसिव होता है। वी डोंट नो व्हाट सॉल्यूशन विल वर्क, व्हाट काइंड ऑफ रिएक्शन विल स्टॉप द हरासर। ये हम गेस कर सकते हैं, लेकिन हमें स्टेटिस्टिकली पता नहीं है। तो ये सारे सवाल भी हैं अबाउट बाय स्टैंडर्ड्स, कि आपका क्या रोल है और आप किस तरह इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं ऑन एन इंडिविजुअल लेवल। अच्छा, फिर एंड पर हम ये भी मौका देते हैं विक्टिम को कि वो एग्जैक्टली पूरा एक्सप्लेन करे कि उनके साथ स्टोरी क्या हुई। उस स्टोरी में भी हम इंटरेस्टेड हैं, बिकॉज हमारे पास अगेन वो टूल्स, डिजिटल टूल्स हमारे पास अब टेक्नोलॉजी है, समथिंग कॉल्ड नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हिस्सा है, जो आपकी पूरी स्टोरी को भी प्रोसेस कर सकते हैं। तो हम उसमें से भी डाटा निकाल सकते हैं, तो वो भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। और आई थिंक वो ऑन अ पर्सनल लेवल विक्टिम के लिए भी जरूरी है कि वो अपना हादसा बयान करे और लोगों से शेयर करें और लोगों को बताएं, एंड फील लाइक यू आर कंट्रीब्यूटिंग टू अ सॉल्यूशन। तो द सिस्टम इज बेस्ड ऑन, इट्स जस्ट अ वेबसाइट। आप वेबसाइट पे जाएं, फॉर्म भरें, एंड इनफ हमारी रिपोर्ट्स जब इकट्ठी होती हैं, तो द वन थिंग वी डू राइट ऑफ द बैट, ये फॉरन इमीडिएट लाइव है, कि हमने एक पाकिस्तान का मैप है और फिर हर सिटी का मैप इन पाकिस्तान, मेजर सिटीज का, अपनी वेबसाइट पे रखा हुआ है। एंड ऑन दैट मैप as reports बढ़ती जाएंगी, you can see exactly cases कहाँ हो रहे हैं. This is live, everyone can go see it. हमें reports किन इलाकों से आ रही हैं, and you can identify hot spots of harassment, कि इस सिटी में, इस इलाके में, इस वक्त, इस टाइम पर जरूरत है, because यहाँ से बहुत ज्यादा cases आ रहे हैं. But as you can imagine, this depends, the effectiveness of this solution depends on the number of reports that are coming in. So if we can motivate women and girls to come and report often, this will be a very, very effective tool. And I like to use this example because I want people to know just what the potential is of artificial intelligence. And without exaggeration, if we do get enough reports, and I'm talking about 10,000, 20,000 reports, which is not a very large number compared to the population of Pakistan. So if we start getting 50,000 reports, एक point आएगा कि artificial intelligence can start to predict कि कल कहाँ पर harassment cases ज़्यादा होंगे. This is absolutely possible. We have this technology. We have we have the technology. We have the models constructed ready. We just need the data. That's it. It's not कोई futuristic बात नहीं कर रही मैं. ये बहुत doable है और आज doable है. Okay, good. I think this brought me to a lot of small questions that. Sorry, I thought you finished. I'm sorry, थोड़ा सा internet connection मेरा. Sorry.
So that is wonderful. I am so happy to see all the energy. Really excited. And मुझे दो छोटे छोटे सवाल हैं and then we'll move to a bigger question. आपने bystanders की बात की, तो क्या bystanders भी जो है वो कोई केस अगर उनके सामने होता है तो वो उसको रिपोर्ट कर सकते हैं या सिर्फ जो है जिस विक्टिम ही ये केस रिपोर्ट कर सकता है? तो अभी जो हमारी सोल्यूशन है उसमें विक्टिम ही रिपोर्ट कर सकता है अभी तक, बट कीप इन माइंड कि हमें ये सोल्यूशन स्टार्ट किए हुए सिर्फ 2 महीने हुए हैं एंड वी आर कॉन्स्टेंटली अपडेटिंग, August 2020. yes and constantly updating and we are improving the solution. तो हमने जब से फर्स्ट टाइम वुमेन इन टेक से बात की थी उस वक्त से अब तक हमने काफी चेंजेस कर लिए हैं, हमने मैप्स और ऐड कर लिए हैं, हम अपना फॉर्म अपडेट एंड इवन ईजियर टू यूज एंड मोर एंगेजमेंट वो कर रहे हैं. अब मैं अंदर की बात वैसे आउट कर रही हूँ लेकिन वी आर ऑल्सो वर्किंग ऑन अ चैट बॉट. पब्लिक पे ठीक है ना? कोई बात नहीं है, ये अपनी टीम है, कोई मसला नहीं है. So we are also working on an AI powered chatbot because we are noticing कि हमारे traffic website पर आता है but people for some reason would not fill the form in and we want to understand why. We want to understand the user experience कि उनके लिए जितना आसान हो सके हो जाए. We're thinking of adding other kinds of harassment on the report on the page as well because जो ये solution है it can be scaled. सिर्फ स्ट्रीट हरासमेंट के लिए नहीं, वर्क प्लेस हरासमेंट है और स्पेसिफिकली और किस्म की हरासमेंट्स है. So we could also enter another. हमारे लिए बहुत आसान है कि हम एक और bystander भी जाकर रिपोर्ट फिल कर सकता है, ये आसान है. As long as लोग इंफॉर्मेशन लेकर आ रहे हैं ना, हम लेने को तैयार है. तो करंटली लेकिन हमारा फॉर्म सिर्फ विक्टिम्स से ही पूछ रहा है. जो फॉर्म है इट्स फॉर द विक्टिम्स बिकॉज उसमें कुछ सवाल ऐसे हैं जो कि सिर्फ विक्टिम ही आंसर कर सकता है. लेकिन एज हया सेड के वी आर कॉन्स्टेंटली वर्किंग ऑन मेकिंग थिंग्स बेटर और हमें जितना इंफॉर्मेशन जितना डेटा मिल सकता है वी विल ट्राई टू डू दैट. सो आई थिंक उनके इंटरनेट का मसला हो गया. या So and because हमें काफी रिक्वेस्ट ये भी आई थी कि आदमियों की हरासमेंट भी होती है. If you know, so we are getting a lot of these questions. Okay, what about this kind of harassment? What about online harassment? So we do, inshallah, as we go further, so we do plan to add some of these things. I mean, so लेकिन I think inshallah time बताएगा. I think we can wait for. Are we still live? Ms. Shamim is there? Yes. Oh, okay. Yeah. आप म्यूट हो गए. Yes. We can't hear you. All right. Yeah, now can you hear me? So if I go away, I'm definitely coming back. Now you can see the background. I have a new background. I'm sitting in the kitchen now. Maybe get better internet. So let me see. We are streaming again. Let me just check if we're streaming. Looks like it. Okay, perfect. So Haya, so that brings me to my next question. I wanna be the one to be talking the least here. I want to give you both of you the most screen time to talk about this. But जब आप chatbot की बात करते हैं ना, तो फिर it becomes a bigger, it creates a lot of impact, ठीक है? But it also becomes a bigger responsibility because now you're saying we are available 24/7, right? So a lot of the startups with this initiative that I've seen, जिसका ये social initiative होता है, वो excitement में आके chatbot लगा तो लेते हैं, but you need a team to manage it 24/7. What are the plans to do that? Right? So I want to hear that. So the chatbot idea that we have is not there to fill in the form. It is not there to replace the form. It is there, as I imagine it, it is a butler for the website. तो आप वेबसाइट पर आते हैं तो आपकी कंफर्ट और आपकी ईज ऑफ यूज के लिए हो सकता है आपने कुछ पूछना हो कि मेरा ये मसला है XYZ. The chatbot will be designed to target you to the right place on the to the right resource on the website or off the website. तो हो सकता है आप आकर बोलें कि I have something very serious to share. तो it will direct you कि आप इधर email कर दें फिर, and one of our emails will be there.
या मेरा केस स्पेसिफिकली ऐसा है, and this is where our feedback is going to come. Someone can come in and tell us कि मैं bystander हूँ, मैंने report करना है, right now there is no method to capture that. मुझे कैसे पता लगेगा कोई bystander आकर मेरी वेबसाइट पर चाह रहा है रिपोर्ट डालना, बट द चैटबॉट का मकसद वहां पर ये है कि वो ये वाला इंफॉर्मेशन कैप्चर करके हमें पास ऑन करेगा. इट इज नॉट गोइंग टू रिप्लेस द करंट सोल्यूशन, इट इज ओनली गोइंग टू एनहांस इट. So it is like an add-on, like a widget. It's not going. Right. Maryam, you want to add something to that? Yes. Basically, as I said, कि this is not replacing the solution. Solution हमारा अभी भी वही है, website है, form है. Chatbot को summarize करें, so it's basically to understand our audience and to engage our audience. Because abhi it's like a black box. Why people come to our website and then they don't go ahead and fill in the forms? So to answer that, वो जो black box है, हम उसका feedback लेना चाह रहे हैं कि what is it? What kind of questions do people have in their mind when they go to our form? I mean, गलती से आ गए या आए थे मगर क्या वजह हुई? So we don't know people अभी interact करेंगे भी कि नहीं करेंगे. This is just a trial. लेकिन फिलहाल हमारे chatbot से यही expectations है to act as an engaging tool with our visitors, website visitors. All right, so perfect, amazing, great. So again, I'm assuming the chatbot is AI based and it keeps learning as it grows. Yeah. Right. We will be using, inshallah, Watson artificial intelligence chatbot. Yeah. ठीक है, सही है, perfect हो गया. There is more that we can talk about this, but maybe we can take it offline and discuss it. ठीक है. अच्छा, अब coming to the main question. कि ये जो आप कर रहे हैं, डेटा कलेक्ट कर रहे हैं और इतना सारा, और जो सिस्टमैटिक चेंज लाने की जो आप बात कर रहे हैं इस डेटा से, व्हाट इज द एंड गोल? बिकॉज आप किसी का प्रॉब्लम तो नहीं, सो आपके जी इंडिविजुअल सोल्यूशन तो नहीं है ये, हम आपकी मदद करने तो नहीं बैठे, हम तो सिर्फ ये पता करने बैठे हैं कि जी आपके साथ क्या हुआ. एंड आई एम ट्राइंग टू कीप इट वेरी वेरी लेमैन, ताकि मैं समझना चाहती हूँ एज अ लेमैन पर्सन कि आप मेरी क्या हेल्प करें, मैं क्यों आपके प्लेटफॉर्म पे आके अपना डेटा डालूं, व्हाट डज सिस्टमैटिक चेंज मीन एंड व्हाट डू यू डू विद माय डेटा दैट आई गिव यू. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट प्राइवेसी राइट नाउ, राइट, लेकिन जो डेटा मैं आपको दे रही हूँ उससे आप क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहते हैं, क्या चेंज लाना चाहते हैं? Maryam, you want to take this one? Yeah. तो पहले अक्सर जब सवाल आता है कि हम क्यों फॉर्म भरें, तो हम अक्सर सिंपल लेमैन में बोलते हैं आप फॉर्म क्यों ना भरें. पहली चीज तो हम ये बोलते हैं कि अगर हम लोग लेमैन टर्म्स में, अभी किसी को टेक्नोलॉजी का पता नहीं है, कुछ नहीं पता, सो वी आस्क अ क्वेश्चन कि सबको प्रॉब्लम है स्ट्रीट हैरासमेंट से. अब अगर एक ऑर्गेनाइजेशन आई है और वो कह रही है एनोनिमसली आप अपना किस्सा 5 मिनट लगा के हमें दे दें, तो व्हाट विल स्टॉप यू फ्रॉम शेयरिंग योर इंसिडेंट? व्हाई यू डोंट वांट टू शेयर योर इंसिडेंट? ठीक है, पहली चीज तो ये होगी लेमैन, उससे हम जानना चाहते हैं कि क्यों. अच्छा, अब सेकेंडली हम करेंगे क्या? सबसे हमारा जो इम्पोर्टेंट, जो शायद लोगों को समझ भी आता है, मैं पहले वो बात करना चाहूंगी जो अक्सर लोगों को हम नोट करें समझ आता है, कि जो हम लोकेशन डेटा लेते हैं आपका, ठीक है, कि ये चीज, ये हरासमेंट किधर हुई. अब आप चलें, ठीक है, पूरी कंट्री में कहीं बहुत अनरियलिस्टिक साउंड करता है शायद, आप एक छोटी सी कम्युनिटी ले, एक छोटी सी सिटी ले, सिटी से भी आप कह लें कि एक इलाका ले, वहां की अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन हमारे साथ करती है, कोलैबोरेट करती है, और हमारे पास उस एरिया की हॉटस्पॉट्स हैं जहां पर हरासमेंट होती है, बल्कि ये भी है किस वक्त होती है, और ये भी हमें मालूम है कि फिजिकल थी, वर्बल थी कि नॉन वर्बल, ये डेटा अगर हम प्रोवाइड करें उन्हें, तो क्या वो इन एरियाज में पेट्रोल नहीं कर सकते? क्या इन एरियाज में जाकर ये करना मुश्किल होगा? अगर मुझे पता चल जाए कि यहाँ इस पॉइंट पर, इस बस स्टॉप पर रोज या हर दूसरे दिन एक लड़की आके रिपोर्ट करती है कि यहाँ मेरे साथ कुछ हुआ, तो क्या कोई एक्शन नहीं लिया जा सकेगा? सो दिस इज रियली बिग अगर देखा जाए. आप जो है इन अ नटशेल आप पाकिस्तान का और उसके डिफरेंट सिटीज का एक हीट मैप बना रहे हैं. और आप कह रहे हैं कि जी सबसे ज्यादा रेड एरिया ये है, ये ऑरेंज है, ये येलो है, ये ग्रीन है. would that explain जो आप करना चाह रहे हैं? Yes, reported cases. We do acknowledge, हम acknowledge कर रहे हैं कि ये सिर्फ सारी हकीकत नहीं होगी, बहुत से ऐसे केसेस होंगे जो रिपोर्ट ही नहीं हुए, लेकिन जो रिपोर्टेड इंसिडेंट्स हैं, तो हमें ये पता चल जाएगा, जैसे कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन कहेंगे नहीं फिजिकल हरासमेंट के हॉटस्पॉट्स किधर हैं. सो those organizations can actually go
and patrol those areas. बल्कि हम तो कहते हैं कि शायद वहाँ की औरतें आ जाएं कि भाई कौन सा बस स्टॉप है जहाँ पर ये रोज एक हरासर लड़कियों को तंग कर रहा है, वही वहाँ वो पहुंच जाए डंडे हो लेकर। सकता है, तो हम विजिलेंटीज yes, निकल yes, सकते हैं। ये बहुत सिंपल है लेकिन इफेक्टिव है। लेकिन मसला ये है, पहला सवाल कि क्यों कोई रिपोर्ट नहीं करना चाहेगा, क्यों? अच्छा, अब सेकंड पार्ट जो हमारा आता है वो है रिसर्च का। अच्छा, रिसर्च को समझना, आई थिंक किसी लेमैन को अगर मैं डायरेक्टली बोलूं तो वो कहेंगे क्या हो रहा है भाई, पेपर पब्लिश कर रहे हो, रिपोर्ट्स पब्लिश कर रहे हो, तो क्या हो रहा है? लेकिन जब हम स्ट्रक्चरल चेंज की बात करते हैं, लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस की बात करते हैं, तो शुरुआत यहीं से होती है। आप कोई भी सब्जेक्ट उठा लें, आप एजुकेशन उठा लें, करिकुलम्स उठा लें, हाउ डिड दे स्टार्ट ऑन डिजाइनिंग दैट सॉल्यूशन, दैट करिकुलम? इट स्टार्ट्स विद रिसर्च। प्रॉब्लम डेफिनेशन क्या थी, व्हाट सॉल्यूशंस कैन बी सजेस्टेड, अवेयरनेस करनी है भाई, अवेयरनेस कैंपेन्स करो। अच्छा, कौन से इलाकों में किस टाइप की अवेयरनेस होनी चाहिए, कौन से एज ग्रुप को टारगेट करना चाहिए। अब यूजुअली जितनी रिसर्च थोड़ी बहुत प्रेजेंट है ना, जो कि जिससे हम स्टार्ट कर देते हैं, वो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के पास जाते हैं पूछने के। लेकिन व्हाट इफ हमें पता चले कि यूनिवर्सिटी नहीं, स्कूल के बच्चों से पूछो, ग्रेड 8 और 9 की लड़कियों से पूछो, वी डोंट नो, हमें भी पता लगना बाकी है। ठीक है, अब हमें आदमियों की एजुकेशन की बात करनी है, मेन, वी वांट टू एजुकेट आवर मेन। अच्छा भाई, ये कौन से आदमी हैं, कौन से इलाके के मर्द हैं, कौन सा एज ग्रुप है इन आदमियों का, क्या ये यंगस्टर्स हैं या ये 40 प्लस वाले लोग हैं? सो दीज छोटी छोटी चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमारी रिसर्च विल ट्राई टू आंसर, एंड इट विल बिल्ड नॉलेज बेस फॉर फ्यूचर रिसर्च एज वेल। और सिर्फ स्ट्रीट हरासमेंट को नहीं, फिर बाकी हरासमेंट भी इसी तरह है, टू गेट टू द डेप्थ ऑफ इट। So we feel this is, yeah. Right. So if I ask you, ठीक है, so I understand that this is your first step and you are doing research and you are collecting data, क्योंकि जब तक data points नहीं होंगे आप उस पर build up नहीं कर सकते, ठीक है? अच्छा, इस वक्त जो हमें उसका result as the public नजर आ रहा है, वो नजर आ रहा है कि जी एक heat map बन रहा है, और एंड दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? वो तो अभी वो भी नहीं है ना, और आप कह रहे हैं कि जी हम इस डेटा को और बहुत कुछ करेंगे। तो ये जो और बहुत कुछ है और ये जो आगे की प्लान्स हैं वो क्या है, वो थोड़े से अगर आप मुझे समझाएं कि व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप एंड द नेक्स्ट स्टेप एंड वेयर डू यू सी योरसेल्फ एंड दिस इनिशिएटिव इन द नेक्स्ट 2 years maybe, that would really help our audience. You want to take this? Okay. तो आपने सही कहा कि सबसे पहले तो हमारा हीट मैप है और वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद जो है स्पेसिफिकली हमने जो अपनी रिसर्च आंसर करने के लिए एक रिसर्च मॉडल डिजाइन किया है जिसमें 8 to 10 क्वेश्चंस हैं जो हमें आंसर करने हैं, जिसमें इंडिविजुअली भी आंसर करने हैं और एज अ कम्युनिटी भी आंसर करने हैं। टिपिकल उसमें इस किस्म का सवाल है कि इस किस्म के आंसर्स हैं कि व्हाट इज द मोस्ट इफेक्टिव एंड इम्पैक्टफुल थिंग दैट यू कैन डू इन दैट सिचुएशन एज अ विक्टिम, what is the most effective and impactful thing people around you can do. So everyone hears okay बहुत मसला है, मैं क्या कर सकता हूँ individually, what is effective policies क्या हैं? देखिए, मैं बिलीव करती हूँ कि सोसाइटी में पार्ट ऑफ द ह्यूमन एक्सपीरियंस है कि करप्शन और इविल हमेशा रहेगा, ठीक है? तो the problem here is not that it exists, the problem here it is unchecked, ठीक है? तो हम उसके बारे में उसको एड्रेस ही नहीं करते, हम उन लोगों को रोकते ही नहीं, हम उन्हें कुछ कहते ही नहीं है। What is the most effective way to call them out? What is it? So on a policy level, so we are now talking about engaging with agencies, चाहे वो गवर्नमेंट एजेंसीज हों या सिक्योरिटी एजेंसीज हों या इवन जैसे मरियम ने कहा नेबरहुड्स में लोकेलिटीज हों, लोकल इन सिटीज के मेयर्स हों या लोकल, हम उस पे चले जाएं, whoever is working to willing to work with us, हमारे लिए the most effective thing that we can give you, the most precious thing is the results of our research and the results of our, and that हमें लगता है वो इतना कीमती है कि you can't put a price on it. Anyone who is sincere about serving the community would be very interested in this data. And आपने कहा कैसी solutions, तो मैंने आपको एक prediction वाली solution बताई थी। उसके अलावा मरियम ने हाईलाइट किया था कि मैं रिसेंटली आपको एक केस बताना चाहूँ क्योंकि हमें बहुत लोगों ने उसमें टैग किया था, बिकॉज वो चाह रहे थे कि हम कुछ करें, ना अंडरस्टैंड पब्लिक का गुस्सा बहुत था। जिस केस में हम टैग हुए थे, तो लाहौर में एक मैकडॉनल्ड्स है और उस मैकडॉनल्ड्स में कोई एक आदमी एक मिनट, लेट्स नॉट हैव नेम्स, ओके? सो लेट्स कीप जेनेरिक, ओके? नो नेम्स।
तो प्रॉब्लम ये थी कि वहां पर कोई एक हरासर था and that person was harassing girls, और फिर someone came forward on social media and then it went viral because the comments were filled with people saying कि oh my god ये अभी तक उधर है, मैं 4 साल पहले जाती थी, ये तब भी उधर था. And just comments were just filled and this person had literally been coming there every day. अब देखिए perpetrator एक है और उसके victims के हजारों में होंगे, हजारों में. And this is something जो हम अब individually इसको कैसे, मैंने वैसे individual example दिया है, but this is something that a hotspot map can really point out कि आपको consistently एक जगह से बार-बार reports मिल रही हैं, बार-बार मिल रही हैं, something is wrong. And from a security point of view, you do not have to have patrol cars all over the city. You can be very specific about how you use your resources. You can also be specific not just with your security resources, but also your education resources. मरियम ने बात की कि हमें अपनी यूथ को एजुकेट करना है, आदमियों को एजुकेट करना है. मुझे तो लगता है हमें औरतों को भी एजुकेट करना है, बिकॉज हमारी अभी तक जो रिसर्च है, इट पॉइंट्स आउट दैट मे बी अबाउट 75% of the women, when they faced harassment, they didn't know what to do. They were just frozen. So that means हमें औरतों को भी एजुकेट करना है कि देखो, this is a reality, ऐसा होगा, and what can you possibly do at that moment. And also instill some resilience कि आपको लगता है you are alone और आपके साथ एक हादसा हुआ, it's very difficult to move on from that. But when you know that you are part of a community, then it gets easy. So even your resources in education, your resources in security, all of those can now be fine tuned. Almost laser point की तरह आपको पता है कि मैं कुछ जाया नहीं कर रही. It's now not about just awareness. अभी तक हमारी solution है awareness, and which is not a bad thing, of course. Awareness is important, but what our research plans to do, and आपने कहा कि हम आगे steps क्या लेना चाह रहे हैं, हम वो अपने results use करना चाह रहे हैं इन सारी organizations के लिए जो already engaged हैं इसी काम में, और उनका हम काम इतना ज्यादा efficient करना चाह रहे हैं और इंशाल्लाह effective करना चाह रहे हैं, impactful करना चाह रहे हैं. Right. Also, so that means, okay, please go on. Sorry, last point. Also structural change पर बात. Also देखिए, structurally we have laws, very strict laws in Pakistan against street harassment, but उसको implement करने का कोई तरीका नहीं है. And again, this research can bridge that gap of how can we now, we know the problem, we understand it, we have a law. How can we bridge this gap? And how can we bring those people who are guilty, how can we make them accountable? And I believe that we only need to bring to account a small percentage of people, और उसी डर से ये problem बहुत कम हो जाएगी. Right now free reign है, कोई कुछ नहीं करेगा, which is the problem. कि मतलब 4 सालों से वो वहां पर है, cases आ रहे हैं, nothing. Sorry, continue. मैं एक point बस ये ऐड करना चाहूंगी, because since Haya इस बारे में बात कर रही है, फिर से मैं reiterate करूंगी कि जब तक आप बताएंगे नहीं तब तक कैसे पता चलेगा. जब तक आप आएंगे नहीं, बताएंगे नहीं, तो कैसे पता चलेगा. तो मसले का हल आपसे शुरू होता है, हमसे शुरू होता है, फिर आगाह आता है. तो you know, this is really important. मतलब क्यों नहीं, मतलब आप 5 मिनट 7 मिनट आप इस बात से तंग आई हुई है कि आप रोज निकलती हैं, या आप अपनी बेटी, यानी कि मैं कहती हूँ कि मैं अगर वहां मतलब अपनी बेटी को बाहर भेज रही हूँ, मैं इस बात से तंग आई हूँ, अल्लाह ना करे कभी कुछ होता है, तो जब तक मैं बोलूंगी नहीं, if I don't share it with somebody or share it with people who are trying to work for this, it cannot happen. We need to speak. So would it be in a nutshell, जो आपके next steps होंगे moving forward with this data is collaborating with organizations who can actually use this data to improve their processes. ठीक है? Training might be another thing, awareness as in training children, school-going children on how to for safety, how to keep themselves safe. Maybe forums जैसे अभी हया ने बात की community building की, कि जी community of women हो, you know, so like we have the women in tech, and which is why we are talking, right? So there's a community of women to support your initiatives. So there's a community of women who support each other and you talk to each other. उसमें mentors भी हैं, उसमें psychiatrists भी हैं. Would that also be
something that is in the plans moving forward? Are these some of the things? I'm not saying you do everything, but maybe with collaborations, and is that also an ongoing process that is in the plan? Absolutely, absolutely. It's already actually started. We're trying to lay the foundation already, but like I said, we're still very new. But aapne kaha, I don't think we should do everything. Why not? We should do everything. Inshallah, we will do everything. Because देखिए ये problem जो है ना, ये कोई एक organization को ये 10 organizations नहीं कर सकती. It's so deep rooted and multi-pronged, and it's almost like stitched into the fabric of our society. कि इसको और कोई तरीका ही नहीं है. Everyone has to participate, and then inshallah the hopeful thing is though कि solution हमारे पास है. We know what to do, and we are quite certain it will work. We just need to get everybody on board. And I strongly believe that inshallah Aagah is just one small piece of a very big machinery that is maybe it's the missing piece. ये कह रहे. But if we can get all these organizations on board and the kind of solution that we're offering, so my vision is that this will have an impact not just on Pakistan, but my vision is we can actually, when we succeed, we can replicate this globally, because this is a global issue. So we are the front runners. We are the first people, as far as I know, who are doing this, who are trying to do something like this. So inshallah, bilkul aapki baat sahi hai कि we need that community. And we need to work with organizations, especially on-ground organizations. And in fact, agar koi ye dekh raha hai, if anyone is part of an organization, please reach out to us. We would be very interested in working with you at this stage, even at this stage. Right, perfect. And I think through the Women in Tech platform, we can also share your contacts so that they can get in touch with you. ठीक है जी. अच्छा, I have another very important question, and then a personal question. That is also very important because हम खवातीन हैं तो थोड़ा सा बनता है gossip करना, but that comes towards the end. But what are the hurdles that you faced so far which you think is pulling you back, and where community organizations, maybe people can help you? It's a big question, but I would really appreciate if you could wrap this up in the next 10 minutes, because हमारे पास बहुत सारे सवाल आ रहे हैं. I really want to give some time to that as well. ठीक है? So Maryam, you want to take this? hurdles की बात अगर करें तो मैं actually थोड़ा सा घुमा फिरा के बात नहीं कर सकती. तो I think अब number one यही है क्या, तो I think हया अगर थोड़ा सा diplomatic तरीके से अपने hurdles बता देगी तो थोड़ा बेहतर रहेगा. लेकिन खैर I think number one problem हमारे पास यही है कि reports हमें लग रहा है जिस तरह हमें वेबसाइट पे विजिटर्स आ रहे हैं या जिस तरह लोग कह रहे हैं बहुत ग्रेट इनिशिएटिव, वो हमें अब तक अपनी रिपोर्ट्स में इतना ज्यादा रिफ्लेक्ट होता हुआ नहीं नजर आता. और सेकेंडली देयर आर पीपल जिनको हमने रीच आउट किया है टू स्पीक टू देयर फॉलोअर्स हैं उनके, उनसे भी थम्स अप आ जाएगा, लेकिन इसके बाद it just ends there. तो ये एक चीज है जिस पे हम constantly काम भी कर रहे हैं. We are trying to brainstorm ideas कि हम ये problem किधर है, तभी हमने ये AI chatbot का भी अंदर डाला था. So I think this is one of the main things. और Haya, if you would like to add something. देखिए, I believe हमारी बहुत सारी problems अभी आने वाली हैं in terms of organization, in terms of interacting with other companies, but हमारे लिए day one से our primary focus is कि we get quality data और उस data से हम एक solution निकालें, and then सारे steps उसके बाद आते हैं. तो जब तक हमारे पास, we are kind of obsessed with data these days. We want people to come, and as much as we can, we're encouraging women and encouraging girls कि please आकर report करें. The thing is कि initiative सबको बहुत पसंद आता है, सबको problem समझ आती है, solution समझ आती है, लेकिन जहाँ पर ये step आता है ना, this is particularly difficult. Getting data from people is particularly difficult, especially in Pakistan, जहाँ पर मैं कहूँगी इतनी शायद इतना intuitively लोगों को समझ नहीं आता, या इस बात की appreciation नहीं होती कि इस solution की power कितनी है और कहाँ तक जा सकती है. So that I would also say कि वो थोड़ा सा एक knowledge gap है, education gap है, जिसकी वजह से people don't just
it doesn't just click to them कि हाँ obviously this is important. You have to kind of explain it. और हम obviously इन किस्म के platforms पे हमेशा तो आके explain नहीं कर सकते, लेकिन of course this does help जितने लोग सुने इस message को, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आहिस्ता आहिस्ता एक community build होगी और लोगों को समझ आ जाएगी कि okay, we are helping and you just have to take 5 minutes. So the biggest problem that the both of you identified right now is data, collecting data. सही है? Is there no other problem that you want to pick up on right now? कोई मसला नहीं है, बहुत पैसे हैं, बहुत अच्छा चल रहा है, कोई support नहीं चाहिए, कोई, so I'm just giving cues here. I'm just it's आप बताएं. मुझे मिस शमीम आपने ही कहा था कि आप अपना काम करो and पैसे आ जाएंगे. I am also in terms of so what I'm asking you, so the question, देखिए काम आप अपना करें पैसे आ जाएंगे, definitely आ जाएंगे. What I'm asking you is what is pulling you back? Is data the only thing pulling you back, or are there other hurdles than data? And right now finance can also be a hurdle. I'm not saying it cannot be. ठीक है? So और इसके अलावा कोई और hurdles हैं इस वक्त, तो वो क्या हैं? Have you been able to put a finger on that? देखिए मैं कहूँगी finance is a hurdle, but a roundabout hurdle. So like I said, our objective is to get reports. But having more finances means having a larger reach. It means you can post ads on social media. It means you can hire full-time staff. Especially अभी तक we are working on these volunteers हमारे साथ काम कर रहे हैं, and I really want to appreciate them on this platform as well कि they've been day and night हमारे साथ लगे रहते हैं. But वो volunteers हैं, and I am very conscious of this कि we need to compensate them किसी तरह, because कब तक करेगा इंसान? It's unsustainable. कब तक हम उनको कहेंगे कि आप काम करते रहे day and night इस तरह? So these are platforms. So this is a platform where people are listening, and if you need to talk about sponsorship or about funding, then now is the time to talk about it. We will, inshallah, very soon. As soon as we hit a minimum number of reports, we do plan to publish सबसे पहले एक छोटा सा report, an example of the reports that we can produce, and that is when we will, inshallah, have a Kickstarter campaign. That is when we will take that step and go into that journey. Yeah, and I want to add, recently we participated in a national competition called as She Loves Tech. Which has been yes. So we qualified from Islamabad. In fact, we were the first place winners. Or inshallah, we'll be competing with all the other winners from Pakistan. So I feel that is a very big platform to be, to be a part of. So हमें लगता है उससे भी हमें काफी, because when such high-profile judges are actually sitting and judging your initiative, and then they tell you, okay, yes, this is good. So then it says something. It's not just us talking. Right. Then it's somebody else, somebody who has worked in such fields, या उनका कुछ कह लो कि profile है जिस पे लोग शायद trust करें. So I think that will also help us come forward and make a point. Another thing that Circles is doing, She Loves Tech जो organization has Circles, what they're doing is they're offering us these free workshops, especially to raise funding and how that entire process works and what it looks like, which has been really great because it's informing a lot of our organization decisions. How do we move forward? What is the next step? So having that kind of mentorship and being in that kind of environment has been very enriching. So yes, definitely funding is on the list in bolds and in caps, because without it, aapko pata hai, it's going to be unsustainable. Or initially we need grants and we need funds. Yes, because yes, as simple as हमारी जो location की, for example, हमारी website है, हमारा cloud database है, plus हमारी API request है. As we are expanding, we need funds to make this sustainable. मतलब बहुत सी ऐसी चीजें आ जाती हैं जिसके लिए अब हम अपने आप को उसी constraint में रखते हुए आगे चल रहे हैं. So definitely अगर हमारे पास external funds और किसी किस्म की help आती है, it will really help the project go further. Okay. Wonderful. Yes. Wonderful. So that's good to hear, and I think as much as the audience is hearing, I'm sure there are people of power in there as well. और अगर वो नहीं है तो वो कम से कम आपकी आवाज आगे पहुंचा देंगे.
So when I said money will follow, I also meant that थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी उसके लिए, ठीक है? हम भी करते हैं उतनी मेहनत. So yeah, so I think that also covers our question about how our audience can help. They can actually spread the word. They can help collect data, and they can spread the word so that you have more support in terms of sponsorships or funding for the project. ठीक जी. अच्छा, अब एक पर्सनल सा सवाल है कि how did the two of you meet? So you two are the force behind Aagah. And I look at the two of you and I think of me and Faiza, right? Behind CodeGirls, behind Women in Tech. Me too. So that's wonderful, right? I mean, women help women. So how did the two of you meet? What is the story behind that? We would really like to hear that. We met about 15 years ago in school. 15 years ago. Wow. Yes. So Maryam, we were in school together. We used to go to the same bus. Yeah, we were in school together basically. हमारी बस एक ही थी, and the thing is that we had to travel to and from school 1 घंटे की ride थी. So I was sitting with Maryam every day for 2 hours, and you have nothing else to do in the bus except talk. And lucky for me, Maryam is very engaging to talk to. So बस वहाँ पे we became friends, and then we went to the same university, and then उसके बाद से we've been in touch. We've been friends since then. Right. So आप लोग जो है, this idea, how did this come about talking? I'm sure this didn't happen 15 साल पहले, right? So when did this come into the making, and when did you, because I think you two live separately. So one is somewhere in the UAE and one is somewhere else. So how did you sort of like that हमें मिलके ये idea करना है? Yeah. तो फिर हुआ ये कि इत्तेफाक से independently ये discuss नहीं था, but I got last year was very interested in artificial intelligence and data science, और मैंने उसके ऊपर बहुत सारे courses करना शुरू किए, और unbeknownst to me, Maryam did the same thing. In fact, we were doing the same courses without knowing it, and because we both did our research and we figured out this is the best course to do. So when we finally did discuss this, and I did tell her, oh, did you know I did so many courses? She said, oh, me too. So we realized that we are very in line again with this. And I think even in life, we were in the same phase, jahan pe we both wanted to use our abilities, basically. So both trained engineers are now in the phase of life jahan pe हमारी शादी हुई हुई है, हमारे बच्चे हैं, and we cannot engage in our professional lives as we would like to, as much as we would want to. But then we thought कि रुकावट क्या है, कि हमें जॉब नहीं मिलेगी, कि हमारे पास टाइमिंग की कमी है, रुकावट क्या है? कोई रुकावट नहीं है. We have the ability, we have the knowledge, we have the technology, we can start something. And then once our courses were done and I felt like, okay, हमें अब इस टॉपिक के बारे में अच्छा खासा पता है. We brainstormed ideas कि on what topic do we want to work, and फिर बहुत सारे topics आए थे जिसमें कट के street harassment पे फिर हमने focus किया था. And to be very honest, day one पर, आप 15 साल पुरानी बात करिए, day one पे जब हमने decide किया था हम ये project करेंगे, it wasn't as expansive as it is now, because the more we get into it, the more we realize हम ये भी कर सकते हैं, and this is also possible, and we can also do this, and we are so completely invested in this now. Maybe we weren't at this, I mean, we've always been invested in the project, but we are expanding our horizons as deciding on how much more we want to get into it. The thing that drives us is we really want a change. Maryam, do you want to add something? Before I want Maryam to add to this, I just quickly want to give you one small suggestion that देखें, ये जो आप कह रही हैं ना कि the more I get into this, the more ideas we have and the more we want to expand this, that's a very good idea. But always remember that you can only do so much, and you want to do two things, and you want to do them well, rather than saying अच्छा हम ये भी कर सकते हैं, हम वो भी कर सकते हैं. जैसे भी मैंने एक बात की थी कोलैबोरेशन की, तो आपने कहा हम खुद क्यों नहीं कर सकते, हम खुद भी सारा कर सकते हैं. नहीं, आप खुद सारा नहीं कर सकते, ठीक है? There's just so much that you can do, because you want to make sure that at the end of the day you add value to it.
And I'm not the one who should be talking, so yeah, let me just shut up. में चीज कॉमन है और हम इसके लिए कुछ भी हम रातें जागेंगे it's like this, we will do it. हमें अभी तक कोई पैसे नहीं मिल रहे इसके लिए. It's just our passion and to invest in something productive. And ये काफी देर से है, ये जब हम यूनिवर्सिटी में थे, हम साथ थे, तब से हम वहां पर भी छोटे छोटे ऐसे प्रोजेक्ट्स हमें इंटरेस्टिंग लगते थे. लेकिन ऑब्वियसली लाइफ है, चेंजेस आते हैं, और हमें ये दोनों को बात ये तंग कर रही थी कि हम वो क्यों नहीं कुछ कर पा रहे. तो ये जो इरिटेशन थी ना, ये लैक ऑफ वो सेल्फ फुलफिलमेंट की कि यार कुछ, तो दिस इज व्हाट brings us together and we are here. Yeah. Right, perfect. So let's go. So I think before we have final words from you, I want to go to the there's been around काफी सारे views भी आए हुए हैं, काफी सारे comments भी आए हुए हैं. Some of the questions I will let you ladies answer after the session because वो redundant हैं, हमने वो बहुत सारी बातें कर ली हैं. पर एक सवाल जो बार बार आ रहा है वो ये आ रहा है कि आपका ये एफर्ट बहुत कमेंडेबल है और आप जो है विदाउट थिंकिंग अबाउट मोनेटाइजेशन you're focusing on the good that's coming out of it. तो सवाल ये है कि why didn't you focus on monetization? मैं एक बात करती हूँ. I would like to, जब हम एक बिजनेस शुरू करना चाहते हैं ना, जब बिजनेस आइडिया होता है, तब बात शुरुआत से ही इट्स अबाउट मोनेटाइजेशन, इट्स अबाउट द मनी. जब बात एक सोशल कॉज की आती है, तब आती है इम्पैक्ट की. ठीक है, तो हमारी जो मोटिवेशन रही थी, इट वाज नॉट अ बिजनेस आइडिया इन द फर्स्ट प्लेस, इट वाज द सोशल कॉज. ठीक है, तो अब ये 2 महीने हुए हैं इस चक्कर में, एंड डेफिनेटली हमने पहले भी बात की है, एक होता है फॉर प्रॉफिट, एक होता है नॉन प्रॉफिट. सो मोनेटाइजेशन में वर्ड नहीं, आई वुड से सस्टेनेबिलिटी, आई वुड कॉल इट. वी विल इंशाल्लाह, वी आर थिंकिंग अबाउट इट कि सस्टेनेबल कैसे बनाएं, क्योंकि लॉन्ग टर्म नहीं चल सकता. बट जब लिटरली मैं उसको एक बिजनेस आइडिया बना दूंगी ना, तो उसका एसेंस, आई फील पर्सनली एंड आई एम श्योर हया विल एग्री, एसेंस थोड़ा सा ना कॉम्प्रोमाइज होने लग जाता है. मुझे लगता है सस्टेनेबिलिटी, या the word compromise when you use kiya is right. The moment you start focusing on monetizing and that becomes your absolute priority, which it does. If you are in a business, it is because you are there to make money, right? So then it is less about the solution and it's less about the impact and it's more about monetization. Maybe हमने monetization को बहुत ज़्यादा downplay कर दिया. हमारे लिए important है क्योंकि हमने sustain करना अपने आप को कुछ ज़्यादा ही downplay कर दिया. But like Maryam said, absolute priority is impact. And then again, NGOs and for-profit businesses are two extremes. We want to be somewhere in the middle where we are in self-sufficient enough that we don't keep having to ask for grants. Okay? But I don't see us getting there right now. That is a step for the future. Right now, we are dependent on grants and we are dependent on Kickstarter campaigns. Right. So sustainability is the next goal. Monetization isn't. Sustainability is to self-sustain the program. Absolutely. Right. Yes. And moving towards an NPO is another one, non-profit organization, maybe converting this, moving on into a non-profit, so that, and then making sure that it self-sustains. Is that the direction that you're looking at? Absolutely. That is. Mm-hmm. So with that, my last question to you would be, where do you guys see yourself? देखें, जब हम काम करते हैं ना, तो हम कहते हैं, और एक बहुत जबरदस्त सेइंग है, मेरे बड़ों ने मुझे सिखाई है कि जब मेरा पेट भरा हुआ है ना, तो मुझे ये सब सूझता है जो भी आप लोगों को सूझ रहा है. ठीक है, और मैं ये सारा काम करती हूँ. तो आप अभी तो आप बहुत पैशनेट है, आप ये कर रहे हैं, बट where do you see yourself in terms of your own personal growth in 5 years, maybe in 3 years, maybe शायद अगले 2 साल आपके लिए बहुत important है for this project, to make sure that it has firm footing. But then after that, when it has firm footing, when it's self-sustainable, then what is your growth plan individually, if I can have it in the next 3 minutes each from each of you? Okay, for me, I imagine Aagah reaching a point where it is self-sustainable. It also can run without me. That's important because eventually I will have to leave this project. And I am almost addicted to entrepreneurial adventures, technical entrepreneurial adventures.
So I see myself as gaining exposure and experience, as creating a network and learning from, there's a lot of learning and growth, personal growth from this entire experience, because I'm sure there will be failures and we will learn how to run an organization, how to deal with other organizations, how to raise that money, and all of that is a process that जिसमें बहुत ज़्यादा learning है. And for me, the next step would be to start the next tech social entrepreneurship project. And I see myself in that role, because that it's like my calling. I will have to go towards that again. Fair enough. Maryam? Yes. So personally मेरे लिए ये है कि I see it in two different ways. एक तो ये है कि क्योंकि मेरा रिसर्च का काफी देर से मेरा बैकग्राउंड चल रहा है, तो मेरा काफी इंटरेस्ट है इसके अंदर. एंड मी आई वांट टू इंक्रीज, जैसे कहते हैं ना, डेप्थ ऑफ योर एक्सपर्टीज. वो डेटा साइंस में मैं अपना बढ़ाना चाहती हूँ इन द कमिंग ईयर्स, जैसे जैसे ये कर रहे हैं. आई जस्ट लव टू लर्न एंड तो दिस इज दिस. और साथ ही साथ जो आपका जो एक ब्रेथ होती है इस फील्ड की, यानी कि ये कहाँ कहाँ अप्लाई हो सकता है, सो जो सोशल इम्प्लीकेशंस आती हैं डेटा साइंस के साथ साथ. सो आई सी माई सेल्फ इन वर्किंग सच प्रोजेक्ट्स बेसिकली, चाहे वो सोशल, डायरेक्टली सोशल कॉजेज हो, या फिर आई एम इवन इंटरेस्टेड इन हेल्थ. मेरा ये भी, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड रहा है इससे जुड़ा हुआ. थोड़े से फॉर प्रॉफिट भी बात कर लें, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वी ऑल नीड, you know, some money to... I don't mind working for profit on my next venture. I don't mind. If it's a venture that adds value and is for profit, yes, yeah, right? ऐसे कम मुश्किल से मिलते हैं, लेकिन या we do hope कि ऐसा कुछ मिले, तो we definitely want to. अच्छा, so before again before final words, एक सवाल आया हुआ है, वो ये कह रहे हैं कि जी, are you saying that the initiative is about modifying street behavior and not punishing people? Does that make sense? So they're saying, are you saying that this initiative is about modifying street behavior, कि लोग जो है वो street पे तमीज से चलें, because अब आप report हो जाएंगे, but it's not about punishing people. देखिए, I think to modify behavior you have to punish people. They're both connected. आप कोई एक काम नहीं कर सकते. The reason street behavior modify नहीं हो रही is because you are not punishing people. You are not calling them out. You're not calling them. You're not calling them out. You're not punishing them. You're not taking them to the court of law. In fact, even socially हम उनको punish नहीं करते. हम उनको बुरा भी नहीं कहते. It's so many conversations I've had where people make excuses for them. So even हम उन्हें socially vilify नहीं करते, socially punish नहीं करते. So I think both those things are not separate. It's the same thing. People सड़क पे behavior improve होगी तब जब आप, when you start punishing, when you start calling out, and when you start identifying. Our solution is how to identify and how to punish them. I think everyone agrees that they should be punished. But that gap, that bridge, कि हम उन्हें identify कैसे करें और फिर हम उन्हें target कैसे करें most effectively. How do we put a stop to this? And I believe that once we start doing that, once we start identifying them and punishing them and naming and shaming them, improvement फिर आएगी सड़कों पर, automatically आपके cases कम हो जाएंगे, इंशाल्लाह. Right. Okay. So there's another question now. One of the most frequent victims of street harassment is our maid category. This is a very good question. Their stories can be very beneficial in collecting data, but how to make this forum available to them? Because this is a technology-based forum and that class is not technology savvy, right? So have you ever thought about that? I think this is a wonderful question. Maryam, आपने आंसर करना है? Yeah. तो पहली चीज तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो करंटली हम लोग की स्ट्रीट हरासमेंट का जो पूरा फॉर्म है, आई वुड से स्ट्रीट हरासमेंट बहुत डिफरेंट टाइप्स की होती हैं. दिस इज मेनली, पहली बात है, फोकस्ड ऑन जेंडर बेस्ड स्ट्रीट हरासमेंट इसको कहते हैं, जिसके अंदर आप इसको सेक्सुअल हैरेसमेंट भी बोल सकते हैं. अब यस, तो मतलब ये है. तो व्हेन यू टॉक अबाउट, अभी उन्होंने कहा है कि हाउ अबाउट वो जो लोअर क्लास है, इसके अंदर डायरेक्टली एग्रीड, उनके पास अगर ये रिसोर्सेज नहीं है, लेकिन we want to partner, or जैसे कि organizations who are working in such areas, they can help us collect data from this. बल्कि एक बार हमने एक से ट्राई भी किया है, हमारी बातचीत चल रही थी कि how about उनके एरिया से अगर वो एक रिपोर्टिंग टूल सेटअप कर दें हमारे लिए, so people can come to them and then report through them.
इस तरह। तो ऑन ग्राउंड अगर हमें पार्टनर्स मिल जाते हैं, ऑन ग्राउंड अगर लोग हमें हेल्प करने के लिए एग्री हो जाते हैं, इट विल बी वंडरफुल. We will be able to, yes. I want to add and it's fine, and we understand that you might not have solutions to all the problems right now, because this is a very, very young initiative. So the traction that you guys are creating right now is marvelous, man. Bravo to you girls. कि आपने पिछले 2-2.5 महीने में काफी ट्रैक्शन क्रिएट किया है. बट ये जो सवाल आते हैं, ये दिस इज टू चर्न योर व्हील्स मोर, कि अच्छा यार ये भी यहाँ पे भी देखा जा सकता है, इसको भी देखा जा सकता है. एक्चुअली ये जो सवाल है, ये बहुत पहले से हमने, जब हम लोग डिजाइन कर रहे थे, हमें मालूम था कि देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु डोंट हैव इंटरनेट, हु आर नॉट ऑन सोशल मीडिया. ये हमें पता है, लेकिन दैट्स हाउ थिंग्स आर. यस, दैट आई मीन इट्स नॉट समथिंग कि हमें आज कोई हमें बता रहा है. सो हमें उस हिसाब से हमने उसको डिजाइन किया, एंड देन वी थॉट ओके पहले इधर तो करके देखते हैं, लाइक पहले इनको टारगेट करते हैं, एंड देन या वो मरियम की बात कि आपकी प्रॉब्लम जो है वो आइडियल नहीं हो सकती, आपकी लिमिटेशंस होंगी, एंड दिस इज वन लिमिटेशन दैट वी डिड रिकॉग्नाइज. बट अगेन ये मेरा मानना है कि इफ यू एटलीस्ट स्टार्ट देखिए हमारी जो रिसर्च होगी ना, इट विल बी यूनिवर्सल फॉर अ लॉट ऑफ थिंग्स एज वेल. तो मैं ये नहीं कह रही कि हम डायरेक्ट उन्हें हेल्प कर रहे हैं, दैट इज अ लिमिटेशन, मानने की बात है. लेकिन आई डू बिलीव कि हम जब सोल्यूशन अपनी लाएंगे एंड हम जो अनकवर करेंगे डिटेल्स अपनी रिसर्च से, a lot of them will apply to both places. And like Maryam said, we are also trying our best to work with local organizations कि वो हमारे लिए वो data ले आए. But of course that is challenging, as expected it would be. और मैंने एक्चुअली जो जेंडर बेस्ड स्ट्रीट हैरेसमेंट की बात इसलिए भी की थी, बिकॉज समटाइम्स ये जो लोअर क्लासेस से मेड्स हैं, या जैसे कि ट्रांसजेंडर्स हैं, यानी कि यहाँ चलो ये भी आई थिंक सेक्सुअल हैरेसमेंट में आ सकते हैं, लेकिन बहुत बार हैरेसमेंट दूसरी रेसिज्म टाइप की चीजें भी होती हैं जो स्ट्रीट हैरेसमेंट में आती हैं. सो इन जनरल अगर आप ब्रॉडर पिक्चर में जाएं तो वो कैटेगरीज फिर अकॉर्डिंगली आपके सवाल भी जो आप उनसे पूछते हो वो भी चेंज हो जाते हैं. लेकिन हम लोग जो हैं स्पेसिफिकली जो जेंडर बेस्ड सेक्सुअल हरासमेंट है पब्लिकली उस पे टारगेट कर रहे हैं फिलहाल. Right, perfect. So, ladies, thank you so much. This was a wonderful conversation. मुझे पता ही नहीं लगा कि 1 घंटा और 10 मिनट हो गए. So that's wonderful. But I want you guys to give me your closing remarks, both of you, and with that we will close this session. And yeah. So, Haya, you want to start with that closing remark? I don't want to oversell us and oversell ourselves and seem like हम दुनिया change करने जा रहे हैं. We are very realistic and grounded in the fact that we are just one small infant organization at this point. But I do want to say कि जो vision हमें अभी नजर आ रही है और जितनी हमने इस पे research की है, there is a lot of potential with Aagah. We just need people to support it. By people, I mean individuals and organizations. And I also want to leave with a message of hope. कि इतनी हमारे मुल्क में हालात खराब है कि sometimes you don't even want to talk about it because इतना disheartened हो चुके होते हो कि इसका क्या हो सकता है, इसका तो कुछ भी नहीं हो सकता. And so I want to leave with that message of hope कि ऐसा भी नहीं है. In fact, I think we don't even have to look too far for a solution. We don't even need that many resources for a solution. We have everything we need to solve this problem. We just have to organize ourselves and we just have to support each other. So inshallah, I hope Allah Ta'ala इस effort को कबूल करें और at the end of the day हमारा काम है मेहनत करना, हमारा काम है कोशिश करना और change तो अल्लाह से ही आता है. तो inshallah hoping for the best. I think on the same note, yes, on the same note, मैं and एक quote है जो मुझे बहुत पसंद आया है, उससे करना चाहूँगी. Don't cry, strategize, and help those who are strategizing. So I think this is really applicable. और सबसे I mean I'm really thankful Ms. Shamim आपके लिए, आपने हमें प्लेटफॉर्म दिया कि हम आके अपनी बात कर सकें. And thank you to all the viewers. मुझे वैसे नजर नहीं आ रहा कितने लोग देख रहे हैं. So Facebook पे जाके देखेंगे पता लगेगा आपको. अच्छा जी. So क्या धमाल मचाएंगे आप लोगों ने. Don't cry, girls, don't cry. Time to strategize. Yes, don't cry, go report. Go report, yes. Very so nice. This is my. With that, thank you so much, ladies, and thank you for your time. I really enjoyed this conversation, and I think we were able to touch the essence of what the Aagah Initiative is all about, and about what the two of you are made up of. So with this, we have a lot of
hope in this initiative. This is not one of those initiatives jo 4 mahine reh ke is going to die out. We see a lot of no, it will not, inshallah. Absolutely. I don't see that coming with so much energy in the two of you and a support system behind you. So we wish you all the best and thank you so much. Thank you. Thank you very much. Thank you so much. Allah Hafiz. Allah Hafiz.